Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are discussing a program of C++. The program number 1 is question: write a C++ program to interchange the value of two variables using the third variable. इस प्रोग्राम में वो ये बोल रहे हैं कि वो दो वेरिएबल्स देंगे और हमें किसी तीसरे वेरिएबल को यूज़ करके उन दो वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वैल्यू इज़ a is equal to 10, b is equal to 20. By the end of the program, we have to make it a is equal to 20 and b is equal to 10. We have to change the values using a third variable. Let that be a temporary variable. So, first, as I said you, we are going to have two header files like #include iostream.h and #include conio.h. These are the two header files that have been used in order to use the functionalities of the inbuilt functions in the library of C++. These has to be included using the term include. Okay, and then we are calling a function called main to start the program, whereas void means it is not returning any value. We are starting with opening the flower bracket. अभी फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद इंटीजर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे. For example, a is an integer, b is an integer, temporary variable is also an integer. उनकी साइज एक इंटीजर वैल्यू जितनी होती है. integer a, b and temp. We are declaring three variables in the memory. Okay, then we are using clr scr to clear the screen, so that if there are any junk values present, they will be cleaned out. And then first thing is cout. Just think, we are a programmer. We are a programmer who is programming an application, so that we can, after using that application, a user can change the values. For example, our application is used in some area and a customer comes in and he opens that app. Then I'll send them a prompt or a message saying that enter the two numbers that you want to interchange. Then in cin, the computer, as a programmer, I will use cin to take the inputs from the user. What inputs I'll take? I'll take two numbers, right? That two numbers will be stored in variables, integer variables a and b. First number will be stored in a, second number will be stored in b. Then cout. Again, after storing those values, now I'm sending them a message called cout. Before interchanging, the value of a was a equal to a, that is a is equal to 10, and value of b was b is equal to b, that is b is equal to 20. And my sentence is finished, is ended. Then now our actual programming starts, actual logic starts here. I will use the temporary variable. It's a site in the memory area where it's named as temporary. Temporary area will be storing the value of a, that is temporary will store 10 now. We have three sites. Just imagine we have three sites: a site, b site and temporary site. Okay, first I will store the value of a, that is 10. I will store 10 in temp, and a will be free now. Now the value of b, that is 20, is stored in a. Then b will be free, so I'll convert I'll put the value of temporary in b, that it will become 10 now. So we have successfully changed the values now. a is equal to 20, b is equal to 10. हमने क्या किया है, तीन वेरिएबल्स लिए हैं, टेम्पररी a और b. पहले जो टेम्पररी जो साइड है, उस साइड में हमने a की वैल्यू डाल दी, टेम्पररी इज इक्वल टू a. अभी टेम्पररी की वैल्यू क्या हो गई, 10. b इज इक्वल टू 20. वो कैसे होगा, a इज इक्वल टू 20 कैसे होगा, a इज इक्वल टू b डालेंगे तो, क्योंकि b की वैल्यू 20 थी, अभी वहाँ पर डालने के बाद a की वैल्यू 20 हो गई. अभी b की जगह पर हम 10 को डालना पड़ेगा, तो उसको हम टेम्पररी को डालेंगे.
ठीक है। उसके बाद सी आउट करेंगे, वी आर यूजिंग सी आउट आफ्टर इंटरचेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए इज ए, वैल्यू ऑफ बी इज बी एंड 1. देन वी आर यूजिंग गेट सी एच, दैट गेट अ कैरेक्टर. देन वी आर क्लोजिंग द फ्लावर ब्रैकेट. अभी इन सब चक्करों में ये टेम्पररी को क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि हमेशा वो 10 और 20 को ही एंटर नहीं करेगा यूज़र, किसी भी नंबर को वो डालेगा. अगर हम टेम्पररी वेरिएबल यूज़ करेंगे तो हम टेम्पररीली उस नंबर को उसमें स्टोर करेंगे, ए की वैल्यू को, और बी की वैल्यू को ए में डाल देंगे, शिफ्ट कर देंगे. अभी बी की जगह पर टेम्पररी में जो स्टोर किया था उधर डाल देंगे. इस तरह से हम सक्सेसफुली इंटरचेंज कर सकते हैं अपने वैल्यूज़ को. समझे? दिस वॉज ऑल अबाउट स्टूडेंट. थैंक यू.